in breadth and height up to tropopause. We are going to talk about air masses and fronts now. We are going to talk about air masses and its huge 3D volumes of air, thousands of kilometers in length, hundreds of kilometers in breadth and height up to tropopause. Tropopause की height क्या होती है? Around 8 to 18 kilometer if you remember. Average height is 13 kilometers. So air masses lie in what? They lie in the troposphere. Is everyone okay? Huge 3D volumes of air, thousands of kilometers in length, hundreds of kilometers in breadth and height up to tropopause. That is what an air mass is about. Everyone clear on this? Please draw this with me. You will understand what did I mean by what I said. जल्दी से बनाएंगे. Quickly draw this. 0 degrees, 30 degrees north, 60 degrees north, 90 degrees. ठीक है? Three air masses. This air mass is called tropical air mass. This is called temperate air mass. This is called polar air mass. What are these? These are huge 3-dimensional spaces. Sir, what is 3-dimensional? बता देता हूँ. What is 3-dimensional? This is do you get that? Can you see that they are different heights? Why are they different heights? Remember, on top what is there? Why is tropical air mass higher? Tropical air mass is higher because tropical air mass is having more convection. It is higher because tropical air mass is convection. Okay, is everyone okay? समझ में आ गया? So what is an air mass? फिर से लिख रहा हूँ. Air masses are 3-dimensional volumes of air with homogeneous property. So this is air mass, simple air mass. Is everyone okay? What do I mean by homogeneous properties? Throughout the length and the breadth. The properties will be same. Say for example, tropical air mass क्या property होंगी इसकी? This will be warm and humid. Yes or no? Warm and humid. What will this will be? This will be cool and less humid. This will be what? Cold and arid. Arid means dry. But why, sir? Why will this be humid? Everyone, why will this be humid? Sir, because there is a lot of heat and lot of evaporation happening. Oh, so can I say an air mass acquires its properties from, कहां से आता है? Air mass acquires its properties from where? ये कैसे बन गया warm and humid? यहीं पर था. It was here for long time and it became warm and humid. What made it warm and humid? So the land below it. Yes or no? What is this called as? Source. Then the place where an air mass develops is called its source region. So where does the air mass gets its property from? Its. Okay, simple question. An air mass which is on the continent, and air mass which is on the ocean, which one will have more moisture? An air mass which is on the continent and air mass which is on the ocean, which will have more moisture? Sir, ocean will have more moisture, yes or no? Ocean will have more moisture. Why? Because more evaporation. So can I say source region will decide your property? If you have understood, smart people and people who are serious and drawing this also following my instructions. Why is this area cold? So because there is ice over. Why is this area dry?
Because sir, the temperature is so low that air's moisture holding capacity is very less. Very little evaporation is happening, less evaporation, and the air's moisture holding capacity is also low. Do we understand what is air mass? Everyone okay? The place where the air mass takes birth. The place where the air mass takes birth. What is that called? Source region. Source region will give its property to the air mass. Yes, everyone. Today is 18th or 19th class. Today is 18th or 19th class of this batch. Can I say the more we attend the classes, more topics we will touch upon and discussions will happen. So in order to acquire the properties, the air should be on the source region or not? And air should be on the source region moving fast, or should be staying over there moving only gently? Because if it is moving fast, it will not acquire the properties. So if air is allowed to stay in some area for around a week, 1 week, it will start acquiring its property and it will become a new air mass. Is everyone okay? Can I say an air mass will have the properties of the source region, but if the air mass leaves the source region, go to some other place. If the air mass goes to other place, will it carry these properties or not? Will it carry these properties or not? Everyone, connect. Thoda sa link, logic. I know you are logical people. When we were at JNU, we had professors like Professor Qureshi and अभी तो Professor Kundu हैं. पहले भी बहुत सारे professors हुए हैं. They all were able to generate ideas in the minds of the students, and the students were like sitting with the teacher. We were sitting on the source region. Professor Qureshi teaching geography, वो शायरी में geography कर देंगे यार. So we were like source region, imbibing them. Do we get that? We were able to think logically. Today you can tell me that western disturbance brings a moist air mass of Atlantic and Mediterranean Ocean. India. Get that? Western disturbance brings a moist air mass towards India during winters. That air mass produces rain in India, because that air mass will collide with Himalaya. Which rain will happen? Orographic rain will happen, and that rain, will it help the crop or not? फसल के पकने में बारिश मदद करेगी, उसे रबी क्रॉप. कनेक्शन है. Air mass coming to. बाकी जो आपकी समझ में आया, मैंने कहा ना, it is about you being able to extract your own understanding. I said education is not about spoon feeding. Education comes from the word educe, to extract. अगर मैं आपसे extract ही नहीं कर सकता, सर ये तो समझ में आ गया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, नशे में हो, कौन सा वाला कर, यही बना रहे हैं. This is high. सर ये हाई नहीं समझ में आ रहा है. Remember we talked about that tropopause is higher at equator, lower at pole. पहले करा चुके हैं. But we are not able to transfer that learning today. That shows you need revision. That shows you need thinking. That shows you need right brain. But left brain में क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. Left brain समझने की ही तो बात है. The whole idea is you require the right brain to understand. Left brain तो सिर्फ डेटा भाई, डेटा रट लो, जो करना है कर लो. Yes or no? Is everyone okay with this? Now my question is, why would an air mass at the source region move to some other region? Why would the air mass move? Why would one air mass move to some other place? Why would the air mass move some other place? One is को मजा नहीं आ रहा है, ले चला गया. Second is रिक्वेस्ट आ गया, ले यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसलिए हो सकता है. गर्लफ्रेंड उधर है, ले चला गया. Many reasons can be there. But meteorologically speaking, there is one, and geography is a science, there is one and only one reason for air to move. Low pressure. Pressure gradient force. Whatever air mass you are, if there is a low pressure somewhere, you will start moving. Nothing else. Only one reason. सिर्फ एक reason होगा, low pressure की वजह से चलेगा. Air mass समझ में आया सबको? Drawing बना लिया. What is tropical air mass? What is temperate air mass? What is polar air mass? ऐसे कहने से there can be a continental air mass. There can be a maritime. Maritime means ocean wala. And you know they will have different property. Continental air mass will be dry. Maritime air mass will be what? Will be moist. Can I say there can be a polar air mass will be cold and dry? Tropical air mass. This. Is everyone with me? सर ये क्या है, बहुत खतरनाक लग रहा है. Maritime, tropical. Will this be wet? और ये ऐसे जा रहा है. So why is it moving? There must be a low pressure air. इधर जाएगा. This is maritime polar. Maritime ocean में लेकिन polar. Polar and tropical. Continental polar. Maritime tropical polar. Do we understand? Now do we understand? Depends on whether it is in ocean. Depends on whether it is in ocean or it is on land. अच्छा, everyone can you see this? Continental polar. Continental and polar. Maritime and polar. Which one will have more moisture? Can you see? This one will be humid. This one will be dry. Why will this be dry? Everyone, why will this be dry? The source region क्या है? Continent. Continents are dry. इसका source region is ocean. So everything is in the drawing also. The names are there. And air mass, if you did not write it, वो लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख के भी दे दिया. All the people who are like, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे notes नहीं बनने, I have to take it for dowry. मेरी शादी कैसे होगी अगर मेरे पास notes है? इससे बढ़िया मिलने नहीं है. You won't get better than this.
and air mass is the term. And before giving you this, have I already explained you? You have already drawn. That's my style of doing it. पहले समझ लो, geography is not polity, geography is not history, geography is not economics. So why should I teach it the economics way? Why should I teach it the polity or the history way? Geography is to be taught the geography way. First understand the concept, and then there is a written part of it. And air mass, as the term implies, an immense body of air, usually thousands of kilometers across, hundreds of kilometers thick, which is characterized by homogeneous physical properties. Properties are homogeneous: cool and humid, warm and humid, warm and humid. See, tropical will all be warm, 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 and temperate will be cool, 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 and pole will be very cold. Simple. That's all we are looking at. Is everyone okay? Most mid-latitude temperate phenomena like temperate cyclones, blizzards, cold waves, ये सब उसी से आते हैं. The cold blizzard which comes in Canada, उसी से तो आता है. It is this cold Arctic air mass which enters. It brings very cold temperature, very dry things. Areas in which air masses originate, what do we call them? Source region. And development of air mass requires 7 to 10 days. I said ना थोड़ा time रुकना पड़ेगा. Now everyone, I want you to remember something. When I started with the atmosphere, first topic, I said all movement of the air in the world is for one reason and only one reason. Right now you said low pressure, high pressure, that's okay. But one ultimate reason, उससे भी ऊपर का reason. On this planet, all kind of winds and all kind of water flow is doing only one thing. इसलिए चलते हैं. Why are cyclones created? One reason. Why westerlies are there? One reason. Why ocean currents are there? One reason. Why air masses are moving? One reason. Is that heat budget? Remember? Any of you were not revising the lectures. Again saying, geography is a new thing to you. Atmospheric geography is a totally new concept for you. Why would you watch the video again? 1.5x पे देखिए. हाँ सर आपने बताया, I remember now. I get that. I want that fluency too. Because otherwise what will happen is next subject will come, next subject will come. It is always wise. When weekends we don't have a class, Saturday, Sunday, 5 classes also revise कर revise करेंगे, look at it, understand it. And I'm saying the more you are reading, with every passing class, there are missing links getting filled. ज़्यादा होगा. That's what we are talking about. This is what air masses are. They keep on moving and they will move because heat is differently there. So heat exchange has to happen and things will keep on moving. And whenever they will move to a new region, will they bring change to that region? If this cold air mass is moving somewhere in this, suppose cold, very cold, frozen wind coming to this tropical area, the Texas में आ गया, Texas is tropical area, इधर ठंडा करेगा कि नहीं? Will it cool or not? It is going to cool. Will it make the air dry? Yes or no? And if it goes into the oceans, it will make dry. So many things are there. Similarly, this maritime polar air mass और टेम्परेट एयर मास कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग वेस्टर्न डिस्टर्ब. ये इंडिया के पास आ जाता है. कैसे आता है वो भी दिखा देता हूँ. ये कनाडा में ब्लिजर्ड आते हैं. दिस इज कैनेडियन ब्लिजर्ड. कोल्ड माइनस. व्हेन इट कम्स टू विनिपेग -33, ओमाहा -23, ओक्लाहोमा सिटी -15, टेक्सास, ह्यूस्टन, पता है कोस्ट है. डू यू नो ह्यूस्टन, डैलस, दिस इज द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको को -4 कर देता है. इमेजिन गल्फ ऑफ मेक्सिको व्हिच इज ऑलमोस्ट एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट बिकम्स -4 फ्रोजन बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड. दीज आर द कोल्ड विंटर्स जो आप फोटो में देखे थे अभी. कनाडा में सब बर्फ हो रहा था. सब इसकी. We are lucky in India. Famous question. Himalayas stop the cold Siberian winds from coming to India. Himalayas stop the cold polar. सर लेकिन ये तो कनाडा में. सुनो हमारा भी तो है, अलास्का में, इधर भी तो है. इधर सीपी है ना ये. This CP will come to India. Everyone, can you see India? So if you are from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and you are not getting snow like Houston. Houston is 25 degrees latitude north, and Kerala is around 10 degrees latitude north. यहाँ पे snowfall नहीं हो रहा है. If you feel that Kerala doesn't have snowfall, you feel bad. Who is to be blamed? Mighty Himalayas. हिमालय ने रोका हुआ है सीपी को आने से. बट हियर द माउंटेन्स आर लाइक दिस. सो पीपल वेट फॉर माय वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस दैट इज हैपनिंग इन हिंदी. हिंदी मीडियम में आई हैव स्टार्टेड विद वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस. देयर आई एम टीचिंग देम दिस थिंग हैपनिंग. इज एवरीवन विद मी? आर वी क्लियर? तो सीपी इधर जाएगा तो मॉडिफाई हो जाएगा. इट विल ब्रिंग थिंग्स एंड दिस इज हाउ एयर मासेस. एवरीवन क्लियर? टॉपिक ऑफ एयर मास. Homogeneous property stays over a source region, acquires those properties. When those properties are acquired, it may stay there, it may move. Why will it move? Because there will be some low pressure. What will it do in the process of this movement? It will take the heat to some other place. It will exchange the heat. And the heat budget will happen. Is everyone okay? That famous question on Himalayas, I hope now you are clear. अब समझ में आया कि हिमालय कहाँ पे रोक लेता है. हिमालय इस सीपी को ही नहीं आने देगा. If this CP comes, गारंटी दे रहा हूँ यहाँ तक बर्फ जम जाएगी. बट वो नहीं होने वाला. Just to give you an example, this is topic of cancer. In India, this is topic of cancer. Remember गुजरात से निकलता है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर से होता हुआ निकलेगा. Go through this. यहाँ तक तो guaranteed बर्फ थे. Is everyone okay? चलिए एयर मास खत्म. And now we come to the topic of front is a place where frontiers are there. This comes from the war terminology. Battle, युद्ध से आता है term. कहाँ पे जा रहे हैं? Frontier पे जा रहे हैं. Pakistan and India. Yes, LOC. On this side Indian soldier, on that side Pakistan soldier. That is a front. तो सर वेदर में फ्रंट कहाँ से आता है? Where does the front come in the weather? Everyone ध्यान दीजिएगा. Please pay attention. Fronts. Air mass done. Now we are on a topic called fronts.
fronts or frontal zone. Keep writing, fronts or frontal zone. The frontal zone. These are zones of interaction. Zones of interaction between two contrasting air mass. First sentence is this: air being a poor conductor, सुचालक नहीं कुचालक है, poor conductor of heat and electricity, resist, आसानी से मिक्स नहीं होती. First one is when two air masses come in contact with each other, the zone of interaction is called front. Air being a poor conductor, resist mixing, does not mix, and a zone of transitional or mixed properties is created called the front. पहले लिख लेंगे. First write this down because this will give peace to your soul. आत्मा को शांति देगा. यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, लिख ले पहले छाप. अब मुझे तुम्हारी पेडिग्री समझ में आ गई भाई, मुझे सब समझ में आ गया. बड़ी बड़ी बात. तुम वही स्कूल का रटाया वाला पहले नोट्स होना चाहिए, उसके बाद वो होगा, बिल्कुल होगा. मी ऑन दिस, पहले छापो. I really thought there are people who will be inspired, keep their mug intact. छापो people, छापो पहले. समझना नहीं समझना कुछ नहीं. दहेज के लिए होना चाहिए. फॉर डाउरी देयर शुड बी नोट्स. पैसा दिया भाई, नोट्स चाहिए. ये समझ आया नहीं है, लेकिन लिखा हुआ तो आत्मा को शांति है. शाम को नींद आती है, उससे कभी मिल पाए नहीं मिल पाए, लेकिन पड़ोस में रहती है इसीलिए खुश हूं. ऐसा मत करो, कुछ साल बाद उसी पड़ोस में उसी की शादी अटेंड करोगे, भात वहीं खाओगे. तो अब इसको my way of looking at it through drawings. All the people who are into notes छापोइंग, so this is your पैसा वसूल छापो notes. Now let us look at this. Everyone, cold air is coming. Cold air is dry also, cold air mass dry also, and warm air is coming. Warm air is also. They have different property. When they come close to each other, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, but they will not mix. So what will happen? This cold air is there. Some warm air will also try to enter this area. This side is what? Total warm, 100% warm. This side is 100% cold. This side is mixed. This is called the frontal zone. समझ में आया? Two air masses which do not mix, when they come in contact, only their edges are meeting. एक air mass, one air mass at 10 degrees Celsius. Other air mass at 30 degrees Celsius. When they come in contact, they do not mix with each other. ये क्या करेंगे? ये अपना अपना जोन बनाते हैं. So 30 and 20, और इसका क्या हो जाएगा? What will be the temperature over here, everyone? The temperature here will be 20 degrees Celsius. What is 20? कैसे आया 20? 30 plus 10 by 2. ये क्या आ गया? Average. समझ में आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स वार्म है, तो वार्म क्या होता है? ह्यूमिड. कोल्ड क्या है? कोल्ड इज एरिड. बीच में क्या होगा? विल इट बी ह्यूमिड और एरिड? नो सर, इट विल बी अ मिक्स ऑफ देम. So this zone of transitional properties, is called a front. समझ में आ गया? फ्रंट कहां से आया? बैटल टर्मिनोलॉजी से. बैटल टर्मिनोलॉजी से this has come. Is everyone okay? Two contrasting. What do I mean by contrasting? Contrasting का मतलब जिनमें अंतर हो. ये कोल्ड है, वो वार्म है. That is what we are talking about. Is everyone okay? Can we move further? Can we move further on this? Fronts are boundary surfaces that separate air masses of different densities. Different density means, फिर बोलेगा sir density very difficult. Different property. Density is the property only, no? Temperature, low temperature means high density. One of which is usually warmer and contains more moisture than the other. However, fronts are formed between any two contrasting. Though contrasting air mass law, they will not mix, and that will be there. When the vast sizes of air masses are considered, the zone that separates them are relatively narrow and shown on weather map. Weather map पे से line की तरह दिखाते हैं. That will I will tell you. Why do they meet? They meet, again, ultimate thing, heat budget. How many types of fronts are there? Let us look at types of front. Is everyone with me on this? This is more important. ये समझ में आया? Okay. Quickly, a fresh page. Everyone, take a fresh page and turn your note. Take a fresh page and turn your note around. We are looking at 4 types of front. Okay. Cold air and warm air.
Quickly draw this. Quickly draw this. Concept को समझते भी जाएंगे and the name will also come. This is called stationary. This is called cold front. This is called warm front. Called occluded front. ठीक है? So imagine, everyone imagine. Imagine there are two armies standing. There are two armies standing. India and Pakistan. India and Pakistan. Okay. Two armies standing next to each other at LOC. Are they attacking each other? Are they attacking each other or just standing and guarding their frontier? They are standing and guarding their. Everyone okay? When two air masses are standing next to each other and they are not trying to, they are happy over there. That is called the symbol on the weather map. इसका symbol होता है. What is the symbol? This is the symbol. Is everyone okay? Weather map पे ऐसे बनाया जाता है. When I was on ship, I used to get my weather map. So immediately looking at it, this is a stationary front. Stationary front. Okay. Now, second thing is, Pakistan tries to enter Kashmir area, infiltrate Kashmir. That is Pakistan's infiltration. पाकिस्तान आकर घुसने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान इंडिया में आकर घुसने की कोशिश कर रहा है. Will India allow it? Will India allow it? India will not allow it. Yes or no? So if Pakistan tries to come, think about warm air. It tries to come and push the cold air. Will the cold air move? जल्दी से बताइए. Will the cold air move? Will the cold air move? Cold air is always heavy. तो नीचे रहेगी. Warm air will be pushed up. But who is trying to invade? अंदर घुसने की कोशिश कौन कर रहा था? Who was trying to invade? Warm air. तो air mass का नाम, front का नाम invader के नाम पे होता है. This is called warm current. Warm current का symbol समझ में आया? Warm air is trying to move. तो किसी ने कहा सर all this has to be understood. So what I'm trying to say is all the diagrams are going to be different. All the diagrams are going to be different. What we will have to understand is name is given by जो entry करता है. तो पाकिस्तान अगर ट्राई करेगा इन्फिल्ट्रेशन की, if the terror groups are sent or something is sent, वो कहाँ जाएंगे? सब ऊपर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे. वो इंडियन आर्मी will make sure कि सब अल्लाह को प्यारे होंगे. If they try to do, but they try to do this again and again. Pakistan tries to infiltrate again and again. So one day India is tired of it. India ने कहा अभी बताते हैं यार, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया. इंडिया विल गो फॉर अ सर्जिकल स्ट्राइक. इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, अब हम और नहीं लेंगे. तो कोल्ड एयर मास जब मूव करता है, व्हेन द कोल्ड एयर मास डिसाइड्स टू मूव, रिमेंबर कोल्ड एयर इज हेवी कंपेयर्ड टू वार्म एयर. कोल्ड एयर विल नेवर राइज. एज अ रूल कोल्ड एयर कभी राइज नहीं करेगा. तो कोल्ड एयर हमेशा क्लोज टू ग्राउंड रहेगा. इस बार भी कौन राइज करेगा? यही पाकिस्तान राइज करेगा. ये फिर से अल्लाह को प्यारा होगा या नहीं होगा? इन बोथ केसेस व्हिच एयर विल राइज? इन बोथ द केसेस व्हिच एयर विल राइज? ऑलवेज वार्म एयर विल बी लिफ्टेड अप. इसका सिंबल क्या है? व्हाट आर दीज सिंबल्स ऑन वेदर मैप? अब समझ में आया? अब ये बुक में नहीं आता है समझ में, इसलिए बना दिया. एंड यू नो फ्रॉम माई प्रीवियस क्लास दैट वेन एवर एयर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस. क्लाउड होते हैं तो दोनों में बारिश होगी. बोथ विल कॉज रेन. बट ज्यादा नुकसान कब होगा? व्हेन कोल्ड एयर डिसाइड्स टू मूव. ये क्यूमुलोनिम्बस बनाता है और ये वाले में तो थोड़ा थोड़ा घुसने की कोशिश करता है बेचारा और उसी में लपेटा जाएगा. जो भी कोशिश करेगा वी विल किल देम. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज वार्म फ्रंट. उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान मत लिखना. Do not write Hindustan Pakistan, but the term front comes from battle only. This word has been taken from forces, armies going to each other. Cold and warm front. समझ में आ गया? ठीक है. Finally, there can be a situation where 3 air masses are involved. 3 air masses are involved. और अगर 3 air masses are there, so imagine India is there, Pakistan is there, and what is this? Afghanistan. हम कहें बेटा आगे बढ़ो, अब देखा जाएगा. सीधा का सीधा क्या लाइन है? बॉर्डर लाइन. ये पूरा का पूरा अब हमारा बॉर्डर किसके साथ हो गया? इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान. पाकिस्तान कहां गया? वेयर डिड पाकिस्तान गो? सर के ऊपर. दिस इज अ स्पेशल फ्रंट. दिस इज कॉल्ड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट. इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल 4 types. Please do not write India Pakistan over there.
बैटल फ्रंट है, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस. आई जस्ट वांटेड टू से अगर 3 कंट्री हो जाए एंड 2 कंट्रीज कम लाइक दिस एंड स्क्वीज द मिडिल वन एंड रिमेंबर ऑलवेज कौन से ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सी एयर जाएगी, विच एयर विल गो अप ऑलवेज, विच एयर विल गो अप, वार्म एयर, हमेशा ही वार्म एयर जाएगा. ठीक है, फॉर अ जीएस स्टूडेंट ये काफी है. फॉर अ जीएस स्टूडेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स. स्टेशनरी में नोबडी इज डूइंग, एलओसी इज मेंटेन, तू भी खड़ा रहे मैं भी खड़ा रहता हूं, नो नॉटंकी. इधर क्या है, वार्म फ्रंट में दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया, टेरर ग्रुप्स आर कमिंग, फिर उनको हमें ऊपर भेजना है. इनफ नॉनसेंस, फिर हम आके बताएंगे बहुत हो गया. इफ यू बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेरर अगेंस्ट इंडिया वी विल नॉट टॉलरेट इट, घर में घुस के मारेंगे. तो दैट्स कॉल्ड द कोल्ड फ्रंट. वार्म फ्रंट ऊपर जाएगा, बहुत परेशान करोगे तो फिनिश, स्टोरी फिनिश. इज एवरीवन ओके? ठीक है. नाउ ये जो क्लाउड्स बन रहे हैं, दिस क्लाउड शुड बी सीन फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर. जो भी क्लाउड बनते थे वो बनेंगे. क्लाउड विल हैपन, रेन विल हैपन, thunderstorm will happen, lightning will happen, everything will happen, depends on that. And remember we said there is a frontal precipitation also. Get that? बुक में चले. हाउ डज द बुक लुक? ये तो समझ में आ गया एवरीवन, दिस वाज इजी. बुक में चलते हैं. बुक में ये लिखा है देयर आर 4 टाइप्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूं. दिस इज वार्म फ्रंट. व्हिच एयर इज ट्राइंग टू एंटर, जल्दी से बताओ. व्हिच एयर इज ट्राइंग टू एंटर, व्हिच एयर इज ट्राइंग टू एंटर, वार्म एयर इज ट्राइंग टू एंटर. कोल्ड इज हेवी, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, ऊपर से निकलेगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेगा. निम्बो स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस, क्यों यू डोंट हैव टू मार्क दिस अप. इसमें कौन मूव कर रहा है, which one is moving everyone, इसमें कौन मूव कर रहा है, cold is moving, India is moving. when cold moves लात मार के ऊपर भेजेगा, इधर लात मार के ऊपर भेजेगा. when the cold air comes, no, ये तो सिर्फ ट्राई मारता है, ट्राई मारेगा easy, the slope also if this is very gentle. जब इंडिया आएगा तो चुन चुन के मारेगा. and then you can see in cold front the rise is almost vertical, lightning है, thunder है, cumulonimbus है. so what is the difference between a warm front and a cold front? cold front is heavy precipitation in a narrow area. उधर क्या है, थोड़ा थोड़ा, एक आतंकवादी भेजा दाएं, दूसरा भेजा दाएं, तीसरा हम निशाना लगा के बैठे, कोई पहुंचेगा उड़ा देंगे. यहाँ पे क्या है, सब तैयार कर लो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सब रेडी होकर मूव एंड देन सर्जिकल स्ट्राइक. इज एवरीवन ओके? डू वी गेट दैट? ये डिफरेंस है. और ये क्या है, ये वाला कौन सा है, कूल. यहाँ पर एक फ्रंट है, यहाँ पर एक फ्रंट है, दूसरी हवा आती है और दे कैच ईच अदर, दे मूव एंड बीच वाला एयर मास इज टोटली लिफ्टेड और ये ऊपर चला जाता है. इज एवरीवन ओके? ऑक्लूडेड फ्रंट. स्टेशनरी बनाया नहीं, स्टेशनरी में कुछ नहीं होता, दोनों खड़े हुए. एंड इंडिया इन इट्स फॉरेन पॉलिसी बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. स्टेशनरी फ्रंट बनाइए. चाइना ऑल्सो रिस्पेक्ट द एलएसी, रिस्पेक्ट ऑल द लाइंस, ऑल द बाउंड्रीज दैट यू हैव. एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे. इंडिया इज फॉर स्टेशनरी फ्रंट, बट इन पाकिस्तान एंड चाइना ट्राई टू मेक इट अ वार्म फ्रंट. हमारे एरिया में घुसते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोल्ड फ्रंट लेके जाएंगे, पूरा का पूरा लेके जाएंगे, सीधा क्यूमुलोनिम्बस, लाइटनिंग, थंडर सब करके आएंगे, लाइटनिंग, थंडर सब करके आएंगे, सारी वोल्टेज हिला कर आएंगे. इज एवरीवन ओके? बट इंडिया बिलीव्स, तब क्यों करना है, यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन टू सपोर्ट. सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, डेवलपिंग नेशंस, वर्क फॉर योर कंट्री. व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग? बैठ के सिर्फ बैठे बैठे इधर तोप गोला ही दाग रहा है और कुछ काम ही नहीं है. एंड दैट टू फॉर पॉलिटिकल रीजंस. Yes or no? That's what we are talking about. Stationary front is a front which is very well guarded. Nobody is trying to enter. But if you're trying to enter, warm air trying to enter is warm front. Cold air trying to enter is cold front. When 2 air masses come close and lift up the central air, उसको ऊपर भेज देते हैं. That is called occlusion. And everyone tell me, when the middle air rises up, when this air is rising up, ये ऐसे जाने लगती है. Can anyone tell me why will it turn? Why will it turn? The air that rises up, why will it turn? What will cause it to turn? Coriolis. Coriolis. So ये जो turning air है, that is called cyclone. बात करो सर. कल तो आपने साइक्लोन बताया 26 डिग्री सेल्सियस. यू टोल्ड अस साइक्लोन यस्टरडे 26 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर, दिस एंड दैट वाज व्हिच साइक्लोन? साइक्लोन. ये कौन सा साइक्लोन है? टेम्परेट साइक्लोन, फॉर व्हिच आई आस्क्ड यू टू डू द डिफरेंसेस. डू यू सी टेम्परेट साइक्लोन इज नॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हीटिंग. टेम्परेट साइक्लोन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एयर बीइंग लिफ्टेड अप. दैट इज व्हाई टेम्परेट साइक्लोन इज कॉल्ड फ्रंटल साइक्लोन. डू यू रिमेंबर दैट? जो लोग नहीं याद है उनको बता देता हूं, इसकी बात कर रहा हूं. कल वी वर टॉकिंग अबाउट दीस साइक्लोन्स, विली विली, टाइफून, पेजियो, दे वर दीस साइक्लोन्स. But temperate cyclone is what I ended on. These are the cyclones and they lie in what? Westerly belt. So ये कहाँ से move करते हैं? They move from west to east. Can you see smartly? They can come on land also because fronts can form on land as well as water. But tropical cyclone can form only on water. Tropical cyclone can form only on water. Is everyone okay? So there is a difference. So yesterday somebody asked me, sir, 60 degree पे cyclone आएगा? ये देख लो आ रहा है. कौन सा आ रहा है? But which one? Temperate cyclone. Is it created because of the heat? No. That was yesterday's cyclone. Today's cyclone is this. There is something called as a tornado. कुछ जगह पर आते हैं, वो सिर्फ लैंड पे आते हैं. टोर्नेडो कम्स ओनली ऑन लैंड. दे आर वेरी वेरी नैरो फनल्स. वो भी एक तरह की इंस्टेबिलिटी है. जनरली यूएस की टोर्नेडो एली में आता है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. ऐसे पानी के ऊपर भी एक भंवर बनता है. दैट इज कॉल्ड वाटर स्प्राउट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ऑप्शनल वालों को हमें समझाना होता है. वी हैव टू टेल देम टोर्नेडो, वी हैव टू टेल देम वाटर स्प्राउट, बट दे ऑल आर सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स. तो टोर्नेडो, वाटर स्प्राउट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन दे हैपन हियर. टोर्नेडो कम्स ओनली ऑन लैंड. थोड़े से डिस्टेंस के लिए होता है, ट्विस्टर बोलते हैं उसे, थोड़े से एरिया में उड़ा देगा वो. ओशन पे आया छोटा सा वो, सो दैट इज कॉल्ड वाटर स्प्राउट. लेकिन the cyclones that we are talking today are these. They are in the westerly belt. Westerlies will push them from west to east. They can come on land as well as water. They are because of occlusion. करके दिखाऊं? ये देखो, ये occlusion हुआ.
जल्दी से बताओ बच्चों, ये सिंबल किसका है? दिस इज द सिंबल ऑफ विच फ्रंट? विच दिस इज द सिंबल ऑफ विच फ्रंट? दिस इज द सिंबल ऑफ कोल्ड फ्रंट. यस सर, कोल्ड फ्रंट. दिस इज द सिंबल ऑफ वार्म फ्रंट. आई एम अ ट्रेन मेटेरोलॉजिस्ट. मेरे पास ऐसे चार्ट्स आते हैं. व्हेन आई एम ऑन सी I get such things. We call them the weather facsimiles. Facts आ जाता है हमारे पास. I look at all these things and where these two meet ना, यहाँ पे occlusion हो रहा है. This is the place where occlusion is happening. So where is the cyclone? This is the cyclone. I have to save myself from. But I want to tell you, this cyclone is not dangerous. इसकी wind speed कितनी होती है? 40 किलोमीटर पर आवर. यही तो है, occlusion हो रहा है. What will this cyclone do? Cyclone will make clouds and it will give me rain, gentle rain. ये तो बहुत important है. This cyclone is not a destructive cyclone. This cyclone is a very important cyclone for temperate belt. It brings a lot of moisture. And if this is the cyclone, ये दिखाई दे रहा है L. यहाँ पे occlusion हो रही होगी, ये L है. कहां को मूव करेगा? वेयर विल इट मूव आफ्टर सम टाइम? वेयर डू आई एक्सपेक्ट इट टू बी? एक्स, वाई और जेड? वेयर विल इट मूव आफ्टर सम टाइम? आई डोंट नो. साइक्लोन, हाउ कैन आई टेल सर वेयर विल इट मूव? यू कैन टेल, एवरीवन यू कैन टेल. दिस साइक्लोन इज इन द विच बेल्ट? वेस्टर्लीज बेल्ट. तो कहां जाएगा सर? थोड़े टाइम बाद कहां जाएगा? आफ्टर दैट ये चला जाएगा. यू गेट दैट? सो द ड्राइविंग फ्यूल फॉर दिस साइक्लोन, व्हाट इज द ड्राइविंग फ्यूल फॉर दिस साइक्लोन? एयर मास कॉन्ट्रास्ट. एयर मास कॉन्ट्रास्ट. एज लॉन्ग एज देयर आर कॉन्ट्रास्ट इन द एयर मास, this cyclone will chalo, otherwise this will. Okay, everyone, L after some time will reach X. Why? Because it is in the formed in the belt of westerlies, whereas India का cyclone कहाँ पे जाता है? It comes towards west. Do we get that? Because वो easterlies में होता है. तो ये हमारा cyclone भी हो गया आज. तो आज हमने क्या कर लिया यार? जल्दी से बताइए क्या किया? What have we done today? El Nino सीखा आज? El Nino and Indian Ocean dipole. GS level का करा है. Optional. I have not done that. Not need. Then we also understood thunder and lightning. Then we understood air mass. Then we understood front. And then we understood temperate cyclone. जिसको हमने connect भी किया. These temperate cyclones are coming to India. Who is bringing them? Western disturbance. ये भी हमने पढ़ा. This is the summary of today's class. एक topic जो मेरा बार बार अटक रहा है. Not able to finish it. That topic, jet stream, बार बार अटक जाता है. साइक्लोन्स तो ये चला रहा है. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था. रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस साइक्लोन. ये ऐसे घूमता है, इसके बीच में आई भी होती है. इसमें कोई आई नहीं होती. बिना आंख का साइक्लोन. विच साइक्लोन डज नॉट हैव एन आई? टेम्परेट साइक्लोन डजंट हैव एन आई बिकॉज इट इज जस्ट एयर मास. इट इज जस्ट एयर मास. टेम्परेट साइक्लोन डजंट हैव एन आई. इसमें है. तो ये काणा है, ये काणा साइक्लोन है और ये अंधा साइक्लोन. देयर इज नो आई इन दिस. इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है. सो यस्टरडे आई टोल्ड यू दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन. मोर एयर कम्स इन, मोर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विल रिलीज, मोर हीट विल कम. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग? It is just about the mechanical lifting of air, and this is cold front, this is warm front, and this is the place where it will be actually turning around. The upper atmospheric ribbons of fast moving well कहते हैं. So polar vortex is also related to jet stream. Well, we will look at jet stream. So I am planning to end atmosphere. Again saying chat, I will be looking at chat only if you use it. There is a statement in front of you. Statement को पढ़ने की जगह सर समझ में नहीं आवे, पढ़ तो सही. My name is Sachin Arora. Sir, I did not understand. होश में रहो. What nonsense we are making of it? Listen, I read a lot, sir, but I did not understand your name is Sachin Arora. किडनी गुर्दा नहीं निकाला जाएगा उसकी. आपकी चैट ही बंद हो जाएगी. Do we get that? कौन सा स्टेटमेंट अभी आंसर कर सकते हैं? इससे ये दिखाई दे रहे हैं जेट स्ट्रीम्स. जेट स्ट्रीम्स कहाँ पर है? यहाँ पर भी है. अपर एटमॉस्फेयर में होती है. कल बताऊंगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो टुमारो वी विल लीव द एटमॉस्फेयर एंड विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोस्फीयर. आई हैव टू कम टू हाइड्रोस्फीयर. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दीज आर देयर. आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. कर सकते हैं आप. Try this question and then we'll end the class. Jet streams occur in northern hemisphere only. Is this true? Is this true? रतन राज, आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं. बिकॉज आई एम एंडिंग द क्लास, दैट्स व्हाई आई ओपन द चैट. एल नीनो में ट्रेड विंड एंड अपवेलिंग ऑफ वाटर में कोई रिलेशन है क्या? आई एम नॉट गोइंग इनटू अपवेलिंग ऑफ वाटर रतन राज. आई नो यू हैव डन ज्योग्राफी, मे बी यू हैव डन इट विद सम अदर टीचर. क्लास तैयार नहीं है उसके लिए, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं रतन राज. जब हो जाएगा इसके बाद ओशन भी आएगा, अपवेलिंग भी सिखाएंगे. डू वी गेट दैट? आई क्लियरली सेड दैट फॉर ऑप्शनल पीपल आई विल नॉट टॉक अबाउट एल नीनो का ओशन कंपोनेंट. Yes, you will type that. Ratan Raj, आपके क्वेश्चन से मुझे पता चलता है. Everyone, please get this. There are many students who have attended coaching classes, many places, online, offline, and have given attempts, and they want right now question answer उनके करवा दिया जाए. In those classes, they did not get the concept clarity, and now they want the class to stop. And right now, उनका होटल वाला आंसर दिया जाए. आएगा. इसके बाद ओशंस में जा रहे हैं. ओशंस में जाएंगे तो अपवेलिंग नहीं आएगा रतन राज. अपवेलिंग आएगा तो आई विल बी टेलिंग अपवेलिंग आल्सो. बट आज मैं शुरू कर दूं. अपवेलिंग क्लास को नहीं पता है बिकॉज रतन राज हैज ऑर्डर्ड इट. आई एम सॉरी, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस. अब मेरी संवेदना खत्म हो गई इस चीज के लिए कि भाई ग्लास में क्रैक है and you are not filling up the crack. वो इंटेग्रिटी आप नहीं दिखाओगे तो I will also be very very rigid in this. मैं कोई चेंज नहीं करूंगा. Jet streams occur in the northern hemisphere. Absolutely wrong. रतन राज, और ये भी है, आशा है आप क्वेश्चन के भी उत्तर दे रहे होंगे क्योंकि आप इनके कोई उत्तर देते नहीं. वेदर रिपोर्ट भी आपने बनाई नहीं, लेकिन वेदर रिपोर्ट आप क्यों बनाएंगे? आपको तो अपवेलिंग चाहिए. वेदर रिपोर्ट बना लोगे, अपवेलिंग भी आ जाएगी. ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई. ये ठीक है. हाँ, सबके पास तो नहीं होता. ओनली ट्रॉपिकल में होता है, वो तो अंधा होता है. दिस इज द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली लेसर. टेम्परेचर ऑफ अ साइक्लोन
आप कह रहे हैं यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे वार्म है, ऐसा कह रहा है. इज दैट ट्रू? डेल्टा एच तो यहाँ पे निकलती है ना, तो विच पार्ट विल बिकम वार्म? विच पार्ट विल बिकम वार्म? ये होगा. इज लेसर नहीं होना चाहिए, मोर होना. व्हाट इज द आंसर एवरीवन? क्या आंसर बचता है? टू ओनली. गुड. लेट मी सी. अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ. पीपल हु हैव डन सी, वेरी गुड, वेरी गुड. आंसर इज सी ओनली. तो जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न एज वेल एज, ओनली गलत हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है. ठीक है. एंड टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नॉट लेस, इट इज मोर. यहाँ पे तो डेल्टा एच, हीट ऑफ कंडेंसेशन, इज बीइंग रिलीज. Everyone, do you get that? No matter what you read in geography, अगर आप, if you are reading only facts, your questions are these latest questions. ऐसा नहीं कि मैं 1990s का question लेकर आ रहा हूँ. They are asking you to think and apply. They are asking you to think and apply. We are doing atmosphere. Please complete your lithosphere also. No, there are linked concepts, and then we will go into hydrosphere. Is everyone okay with that? I have a request. Thursday, I am not taking a class. I have some engagement with that. So Thursday's class, I will see. I might take as a doubt session on Saturday, but for Thursday, use it as your revision. Tomorrow I will end the miscellaneous topics of atmosphere, and then I will be getting into hydrosphere. Is everyone clear with that? Please, again a request, class 11th NCERT. I don't want to see in the chat NCERT का chapter तो बता दो, मैं lollipop नहीं लेकर आया हूँ. Class 11th NCERT, go to the content page please. People who can't understand any English, हिंदी बैच में चले जाएं, वो आपको फिर हिंदी में करना चाहिए, जबरदस्ती ना करें. I am teaching, the same teacher is teaching, not an issue. But there I have started with world geography. I had a different design for the Hindi people, and for you people, English people, I started with general geography. They will get general geography after this. You will get your world geography after this. Please do not compare. Do not unnecessarily feel कि उसको ये पढ़ा रहा है, उसको पढ़ा है. टीचर के पास आजादी है. I decide which batch can be taken which way. So I decide the strategy accordingly. Thanks a lot. From English medium, I do expect a little more integrity. थोड़ा सा अपना integrity लेकर आए. छोटी छोटी चीज पर अभी क्या बोलेगा? सर ये समझ नहीं आया. Why only some cyclone have an eye? अभी बताया था अंधा और काना, बताया भी ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट बोलेगा नहीं समझ में आया. तो प्लीज वॉच दिस इफ रिक्वायर्ड. दीज आर न्यूअर थिंग्स. इफ दीज आर न्यूअर थिंग्स, प्लीज वॉच देम अगेन. नो हार्म इन दैट. कोई छोटा नहीं हो जाए. थैंक्स अ लॉट. हैव अ ग्रेट डे.